अच्छा guys, I'll start in 2 minutes. अच्छा guys, let's start. Okay, so in the last class, I taught you guys how to find out the full cost or how to do costing for a job. सही है? So आज की class में I've specifically taken out parts from questions and just in which हमें full cost निकालनी है और job costing करनी है. So in all these questions, I've already calculated the overhead absorption rates, okay, because we've already covered that. So overhead absorption rates मैंने already calculate किए हुए. Using these overhead absorption rates and the data given, we'll be finding out the full cost of units, and we would be doing questions on job costing. So yeah. So we're just gonna be doing past paper questions of what we discussed yesterday. So let's start off. This is, by the way, October, November 11, 21. Okay. So before I start with this, I want you guys to tell me, is my audio clear and is my video not lagging? Are we good to go? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. अच्छा यार, just a quick reminder, full cost per unit निकालने के लिए हम लोग labor cost, material cost तो लिखेंगे, but with that we will be adding overheads. And I hope you guys remember कि overheads charge करने के लिए हम लोग overhead absorption rate use करेंगे. So let's read up about this. So the question says the manager of T Limited calculates selling price per unit based on full cost plus a 25% markup. So the first thing that you should know is कि यार absorption costing का एक advantage ये होता है कि क्योंकि हम absorption costing के through किसी भी unit की full cost निकाल सकते हैं, ठीक है? This is what it teaches us. So since we know the full cost of a unit because of absorption costing, this helps us in setting the selling price of the product. क्योंकि जब हमें किसी भी प्रोडक्ट की फुल कॉस्ट पता चल जाती है, हमें समझ आ जाता है कि हमें कितने का पड़ रहा है, तो उसके बाद उसकी सेलिंग प्राइस डिसाइड करना आसान होती है. एंड दिस इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, दैट इट हेल्प्स यू in setting the selling price of a product. So right now we will be focusing on how to find out the full cost first, and then I'll eventually teach you how to find out selling price using that. So let's find out the full cost.
So we need to find out the full cost per unit for the product of T Limited, and this unit uses material of, so उसमें material लगता है 3 meters and each meter is for $4. So उस पर material लगेगा of $12. Labor takes up 7 hours to make 1 unit and we pay them $8 per hour. 8 sevens are 56. ठीक है, ये आ गया material और labor. सही है. If you want, we can add this. Write down 68, which would be our prime cost. And then we would be adding overheads. Now, in this question, since we had two overhead absorption rates, सही है, ठीक है, तो हम दोनों डिपार्टमेंट के इसमें ओवरहेड्स लगाएंगे. So पहले मशीनिंग का ओवरहेड आएगा और फिर हमारे पास असेंबली का ओवरहेड आएगा. ठीक है, मशीनिंग का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट वाज $17 per machine hour. अब यार ये जो क्वेश्चन है ना, दिस इज कंपैरेटिवली इजी बिकॉज इसमें we don't have machine hours separately or labor hours separately. We have just been told that each unit takes 3 hours in the machining department and it takes 4 hours in the assembly department. ठीक है, so using this information we would be absorbing our overheads. इसमें क्योंकि हमें machine hours अलग से नहीं given, so we will just assume कि machining department में machine hours जो हैं वो 3 लगते हैं और labor hours भी 3 ही लगते हैं. Okay, since our absorption rate is $17 per machine hour and in the machining department, so I'll write $17. This is for 1 hour and in the machining department we take up to 3 hours. So उस पे 3 घंटे के overheads लगेंगे. ठीक है, so 17 into 3 which is 51 और assembly का absorption rate is 15.75 per labor hour. ठीक है, so हमें असेंबली डिपार्टमेंट के लेबर आवर्स अलग से नहीं गिवन, तो विल जस्ट अज्यूम कि इसने हमें बताया कि असेंबली में 4 घंटे लगते हैं, तो वी विल जस्ट बी टेकिंग दीज 4 आवर्स. इससे हमारे पास इसका एब्जॉर्प्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन आ जाएगी. दिस इज 63. इफ वी ऐड दिस अप वी विल गेट द टोटल full cost. Which would be, this is 182. Okay guys, do you have any confusion in this? यार उमर, ये जितने भी क्वेश्चंस अभी हम सॉल्व कर रहे होंगे आज, उन सबका ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मैंने पहले से निकाला हुआ है. ठीक है, बिकॉज आज की क्लास में हम लोग फुल यूनिट कॉस्टिंग कर रहे हैं या जॉब कॉस्टिंग कर रहे होंगे. ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स बिकॉज हमने पिछली क्लासेस में कवर कर लिया. सो इन ऑल दीज क्वेश्चंस आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेट द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स. ठीक है, नाउ you guys can take a screenshot of this if you want and then I'll be moving on to the next question. Okay, सही है. ये क्वेश्चन है, हमारे पास
ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकला हुआ है दो डिपार्टमेंट्स का, मशीनिंग का और लेबर का, असेंबली का, ठीक है. दिस इज October November 1422. So we need to do part E, in which Aluko Limited has been asked to prepare a quotation for a customer requiring 250 units of this product, BS200. The company requires a 35% gross profit on each order, and we need to calculate the quoted selling price. क्या हमें ये कितने की selling price देनी चाहिए to the customer? Now, before quoting the selling price, we will have to find out the full cost. सही है, ताकि हमें cost पता हो तो हम उसके through selling price निकाल सकें. So let's start off with the cost. हमारा जो point of focus होगा, that would be this product, which is BS200. So let's start. The first cost that I have would be the cost of material. So direct material की जो cost आएगी, सही है. So BS200 के एक यूनिट पे जो मटेरियल लगता है, that is of $14, ठीक है, $14.1, and we need to multiply this with 250 because हम 250 यूनिट्स की कॉस्ट निकाल रहे हैं. So this will be मटेरियल लगेगा इस पे 3525 का. फिर हम लोग लेबर लगाएंगे. Now since we have two production departments, तो ये दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इसमें लेबर काम करेगी और हेंस दोनों डिपार्टमेंट की लेबर कॉस्ट होगी, ठीक है. डायरेक्ट लेबर, मशीनिंग डिपार्टमेंट की अलग लेबर लगेगी और असेंबली डिपार्टमेंट की अलग लेबर लगेगी. So in the machining department, we pay our labor at the rate of 7.8 per hour. Sorry, we pay them 7.8 per hour, and labor takes 50 minutes to make 1 unit of BS200. So अगर मैं ये देखना चाहूँ कि यार BS200 बनाने के लिए या BS200 का एक यूनिट बनाने के लिए जो मशीनिंग डिपार्टमेंट में लेबर की कॉस्ट आएगी वो कितनी होगी. सो लेबर को हम एक घंटे के पे करते हैं 7.8, सही है. लेकिन क्योंकि BS200 बनाने में उसको एक घंटा नहीं लग रहा बल्कि सिर्फ 50 मिनट लग रहे हैं, तो हमें लेबर कॉस्ट भी सिर्फ 50 मिनट की पड़ेगी, नॉट ऑफ एन आवर. तो मैं 50 मिनट की कॉस्ट कैसे निकालूंगा? Cost of 1 hour is 7.8, and then I'll multiply that by 50 and divide that by 60 so that I can find out the cost for 15 minutes. So the cost of 50 minutes is $6.5. So this is how much we will be paying the labor in the machining department to make 1 unit of BS200. So yeah, $6.5 is the cost, the labor cost. And since we need to find out the cost for 250 units of BS200, so I'm eventually multiplying that by 250. So the labor cost in machining department would be $16.25. Then in the assembly department, let's see, in the assembly department, we pay our labor at the rate of $6.3 per hour. And labor takes only 12 minutes to produce 1 unit of BS200. So assembly department की अगर मैं labor cost निकालता हूँ, we pay them 6.3 per hour, but since they only take up 12 minutes to make 1 unit, तो labor cost भी 12 minute की आएगी on each unit. Could anyone please calculate this for me? What would be the labor cost for 1 unit of BS200? Okay, this is 1.26. This is how much we pay the labor in the assembly department to make 1 unit of BS200, and then I'll just multiply this with 250, which would be 315. ये labor cost हो गई, ठीक है. If we add this up, we get the prime cost.
which is 5465. Now that we're here, the most important part, मटीरियल लेबर ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे ओवरहेड्स की कॉस्ट. ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसके यूनिट्स पे ओवरहेड कितने चार्ज होंगे. सो हमारे पास दो डिपार्टमेंट्स हैं जिसके ओवरहेड हम चार्ज करेंगे इसमें. वन इज मशीनिंग एंड वन इज असेंबली. सो मशीनिंग डिपार्टमेंट का एब्जॉर्प्शन रेट इज $5.14 पर मशीन आवर. सही है, मशीनिंग डिपार्टमेंट का एब्जॉर्प्शन रेट लगता है ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स. नाउ इफ यू नोटिस, हमारे पास ना मशीनिंग डिपार्टमेंट के BS200 के मशीन आवर्स भी गिवन है. मशीन आवर्स लगते हैं 30 मिनट्स और इस पे लेबर के आवर्स लगते हैं 50 मिनट्स. लेबर का इतना टाइम लगता है. बट सिंस आवर एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ द मशीनिंग डिपार्टमेंट इज एज पर मशीन आवर. सही है, तो हमारे लिए अभी जो काम का टाइम है इन दोनों में से वुड बी दिस. मशीनिंग डिपार्टमेंट के एब्जॉर्प्शन रेट क्योंकि एज पर मशीन आवर है, तो मेरे लिए जो काम के मिनट्स हैं वो भी मशीन आवर्स होंगे. सही, सो आई विल बी टेकिंग दिस टाइम to find out my overheads, which is my machine hours, rather than this time, which is my labor hours. ठीक है, so आधा घंटा लगता है मशीन का एक यूनिट पे और एक घंटे की कॉस्ट थी 5.14. तो आधे घंटे की कॉस्ट होगी 5.14 into 30/60. सही है, इससे हमारे पास आ जाएगा कि BS200 के एक यूनिट पे मशीनिंग डिपार्टमेंट का ओवरहेड कितना होना चाहिए. सही है, so this is for 1 unit and we wanted it for 250 units, so we'll eventually multiply this with 250. This will be 643. अब देखते हैं असेंबली के ओवरहेड्स कैसे चार्ज करेंगे. असेंबली का एब्जॉर्प्शन रेट है हमारे पास 6.48. It's 6.48 पर लेबर आवर. ठीक है, तो 6.48 पर लेबर आवर होने का मतलब ये है, मैंने यहाँ पे लिखा 6.48. अब देखते हैं कि असेंबली डिपार्टमेंट में ये असेंबली डिपार्टमेंट के लेबर का टाइम है which is 12 minutes और ये असेंबली डिपार्टमेंट के मशीन आवर्स हैं which is 5 minutes. Now हमें ये डिसीजन लेना होता है कि ओवरहेड चार्ज करते वक्त should I be concerned with the labor hours or the machine hours. But since इसका absorption rate is as per labor hour, so मेरे जो काम का टाइम है असेंबली का वो ये होगा लेबर आवर के मिनट्स. ठीक है, so 6.48 into 12/60. सही है, we had to charge an overhead of 6.48 for 1 hour of labor. But since assembly department में सिर्फ 12 मिनट लगते हैं लेबर को, तो फिर मैं ओवरहेड भी की कॉस्ट भी सिर्फ 12 मिनट की लगाऊंगा. So this will be 6.48 into 12/60. This is the overhead cost for 1 unit, and then I'll just multiply this with 250. This is 324. ठीक है, since there are no more costs, सारी हमने कॉस्ट ले ली, मटेरियल लेबर और ओवरहेड कॉस्ट ले ली, इससे हमारे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट. which is 6432. Now before I teach you guys how to find out let's say the selling price, I want to be sure full cost निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम है. Any question? अच्छा,
स्पेशली तुम लोग को इसकी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन की वर्किंग में कोई मसला है कि मैंने किस तरह इसकी ओवरहेड्स कैलकुलेट करें, या लेबर कॉस्ट निकालने में कोई कंफ्यूजन है? यस, एनीवन? ओके, honey, you should probably message me on WhatsApp after this class, then we'll sort this out. Haris, overhead में what's your question? Or Shamas, you have a question that why did we choose 12? Okay, चलो overhead में मैं समझाता हूँ कि यार असेंबली का जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट था, ठीक है, असेंबली का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट था, इट वाज सपोज्ड टू बी $6.48 पर लेबर आवर, ठीक है, असेंबली का। अब देखो तुम ऊपर क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो यू विल रियलाइज कि असेंबली डिपार्टमेंट के तुम्हें दो चीजों का टाइम गिवन होगा कि असेंबली डिपार्टमेंट में एक यूनिट को मशीन आवर्स कितने चाहिए होते हैं और उसी यूनिट को लेबर आवर्स कितने चाहिए होते हैं बनने के लिए एक यूनिट को, ठीक है। बट सिंस आर एब्जॉर्प्शन रेट इज पर लेबर आवर, सही है, तो इस एब्जॉर्प्शन रेट को चार्ज करते वक्त जो मेरा काम का टाइम होगा, सही है, दैट आई वुड बी यूजिंग वुड बी द लेबर आवर्स, ठीक है। तो असेंबली डिपार्टमेंट का लेबर का टाइम है 12 मिनट और मशीन आवर का टाइम था 5 मिनट। बट सिंस आर एब्जॉर्प्शन रेट वाज एज पर लेबर आवर, इसलिए मैंने ये लेबर आवर वाला टाइम लिया 12 मिनट्स वाला। इज दिस क्लियर नाउ? ओके, इसी तरह तुम देखो मशीनिंग है, मशीनिंग का एब्जॉर्प्शन रेट निकालते वक्त भी ना मशीनिंग का भी मुझे मशीन आवर्स भी पता होंगे, मुझे लेबर आवर्स भी पता होंगे, लेकिन क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन रेट इज एज पर मशीन आवर, तो मैं मशीनिंग डिपार्टमेंट का एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हुए जो टाइम ले रहा था वो मशीन आवर्स का ले रहा था, बिकॉज द एब्जॉर्प्शन रेट वाज एज पर मशीन आवर, इसलिए आई मल्टीप्लाई दिस विद 30, ठीक है। ओके गाइस, नाउ दैट वी हैव द टोटल कॉस्ट, either we can figure out how to find out the selling price right now or we can do it at the end of the class for all questions together. So yeah, so for now what we can do is we can just concentrate on finding out the full cost, ठीक है, फिर एक साथ मैं तुम लोगों को सेलिंग प्राइस सबकी निकालना सिखा दूंगा, ठीक है। So now moving on to the next question, guys. I'm removing this question in case you want to take a screenshot, so I'll just pause for like 5 seconds. Okay, next question. This is the question, and the good thing is that this question is about job costing. जॉब कॉस्टिंग में मैं रिवाइज करा देता हूँ क्या सीन होता है। देखो, जो फैक्ट्रीज जॉब कॉस्टिंग टाइप के ऑर्डर्स लेती हैं, तो जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है कि उनका हर ऑर्डर जो होता है ना वो डिफरेंट होता है, वो वेरी करता है, वो कोई एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स नहीं बनाते, बल्कि वो ऑर्डर टू ऑर्डर अलग अलग काम करते हैं फॉर डिफरेंट कस्टमर्स, एंड दे सी यार इस ऑर्डर में, इस स्पेसिफिक ऑर्डर को बनाने में मटेरियल कितना लगेगा, लेबर कितना लगेगा, सो दे फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट फॉर एवरी जॉब separately. So now this question being October November 1521, in this we have a job जिसका number है 68, and in this job, सही है, since we have two departments, ठीक है, और दोनों डिपार्टमेंट्स के मैंने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट लिखे हुए हैं, ठीक है, दिस इज द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट. So this job takes up materials of $3,500 in the machining department and of $100 in the assembly department, and labor cost आती है 500 और 1400, ये आ गई मटेरियल और लेबर कॉस्ट. फिर ओवरहेड्स निकालने के लिए
सही है, इसने हमें दोनों डिपार्टमेंट के मशीन आवर भी दिए हैं और दोनों डिपार्टमेंट के लेबर आवर का टाइम भी दिया है कि लेबर का कितना टाइम लगता है। अब ये हमें देखना होगा कि ओवरहेड एब्जॉर्ब करते हुए हमें मशीन आवर के थ्रू करना है या लेबर आवर के थ्रू करना है, डिपेंडिंग कि कौन से डिपार्टमेंट का एब्जॉर्प्शन रेट इज एज पर मशीन आवर और किसका इज एज पर लेबर आवर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ। We need to prepare a statement to show the total cost of job 68. Clearly identify the prime cost and the total overhead cost. Okay, not a problem. So first of all, we'll have the direct material. Okay, and since we don't have a lot of lines, तो मैं direct material ना मैं direct material दोनों क्लास डिपार्टमेंट्स का मिला के ले रहा हूँ। सही है, which will be a material cost of $3,600. डायरेक्ट मटेरियल आ गया $3,600 दोनों डिपार्टमेंट्स का ऐड करके। फिर मैं लेबर भी इसमें दोनों का साथ लिख रहा हूँ, दोनों डिपार्टमेंट का मिला के साथ लिख रहा हूँ क्योंकि गिवन था, सो ये कैलकुलेट भी नहीं करना था। सो आई थिंक इस जॉब पे लेबर लग रही है 500 और 1400, तो लेबर कॉस्ट हो जाएगी मिलाकर 1900। फिर जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगी मेरी प्राइम कॉस्ट। हाँ भाई, कितनी आ रही है प्राइम कॉस्ट? 5500। नाउ द ट्रिकी पार्ट, वी विल ऐड ओवरहेड्स। ठीक है, एक हमारे पास डिपार्टमेंट है मशीनिंग और एक डिपार्टमेंट है असेंबली। सही है, अब जरा देखते हैं। मशीनिंग डिपार्टमेंट का overhead absorption rate is $1.69. It's $1.69 per machine hour. तो मुझे मशीनिंग डिपार्टमेंट में ओवरहेड एब्जॉर्ब करते हुए जो काम के आवर्स हैं वो मशीन आवर्स हैं। ठीक है, सो 1.69 को हम मल्टीप्लाई करेंगे with, should I multiply this with these 100 hours or these 20 hours? ओवरहेड निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं, मशीन आवर से या लेबर आवर से? मशीनिंग डिपार्टमेंट का we should be multiplying it with 100 because the overhead absorption rate for machining department is as per machine hour. I'm really glad you all get it. So 1.69 into 100. सही है, इसका ओवरहेड आ जाएगा 169। फिर असेंबली डिपार्टमेंट का जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है that is 3.10. This is 3.10 per labor hour. तो मुझे इस 3.10 को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए guys? This is assembly department. What should I be multiplying this with this 3.10 with? With 60 hours that are the labor hours. So 3.10 into 60, which is how much? $186. So now that I'll add all of this, prime cost and the overheads, I'll get my total cost, which is 5855. ठीक है, अच्छा याद रखना यार, थ्योरी है ये कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से क्योंकि हम फुल कॉस्ट निकाल लेते हैं किसी भी जॉब की, किसी भी यूनिट की, तो दैट हेल्प्स अस इन सेटिंग द सेलिंग प्राइस। कि यार अगर मुझे अपनी एक प्रोडक्ट की पूरी कॉस्ट पता है तो उस कॉस्ट को दिमाग में रख के मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कि हाउ मच आई शुड सेल इट फॉर। ठीक है, खैर नेक्स्ट अप वी were getting 3 marks to find out the selling price for this, but we will be doing that later. So today I'm just focusing on how to find out the cost. So then moving on to the next question. This is the next question in which we have 2 products. Okay, let's see. So yeah, so first of all, we had to find out the absorption rates for each department, which I've already done, as you can see. Now,
Before we move on with this question, I want you guys to know, देखो इसमें absorption rate है 5.42 पर machine hour और फिर है 2.75 पर labor hour. लेकिन कुछ questions में क्या होता है, if you see they don't give you machine and labor hours separately. This is October November 1623, टॉप पे लिखा है मैंने. So ये क्वेश्चन तो और भी आसान होते हैं यार, जिसमें ना तुम्हें वो मशीन आवर या लेबर आवर अलग से नहीं देते. इसने मुझे मशीनिंग डिपार्टमेंट के आवर्स बताए, असेंबली डिपार्टमेंट के आवर्स बताए. ये नहीं बताया कि भाई लेबर आवर कितने हैं और क्या कहते हैं मशीन आवर कितने हैं. तो हम जब एब्जॉर्प्शन रेट लगा रहे होंगे ना, सही है, तो विल जस्ट मल्टीप्लाई देम विद द आवर्स दैट आर गिवन. मशीन आवर्स, मशीनिंग डिपार्टमेंट को मशीन डिपार्टमेंट के आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, असेंबली डिपार्टमेंट के ओवरहेड को असेंबली के आवर्स से डिवाइड करेंगे. We don't have to differentiate between machine and labor hours since they're not given. So let's try and find out the total cost per unit of product A and B. So product A, product B, and we need to find out the total cost per unit. ठीक है. Now, since we need to find out the total cost per unit, ये जो number of units वाली चीज है, ये हमारे लिए relevant नहीं है. हमें सिर्फ per unit चीज चाहिए. तो उसकी per unit direct cost कितनी है? Direct cost हमें given है प्रोडक्ट ए की 5.75 और प्रोडक्ट बी की गिवन है 8.25. इन केस यू गाइस डोंट रिमेंबर, डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता था मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट. सही है. आई थिंक आई हैव टोल्ड यू दिस ओवर एंड ओवर अगेन. सो मटेरियल और लेबर कॉस्ट मुझे गिवन थी, वो मैंने लिख दी. फिर मुझे इसमें ऐड करनी चाहिए अपनी ओवरहेड कॉस्ट. तो ओवरहेड में एक ओवरहेड लगेगा मशीनिंग का, एक ओवरहेड लगेगा असेंबली का. सो पहले प्रोडक्ट ए पे लगाते हैं ओवरहेड्स. मशीनिंग डिपार्टमेंट का एब्जॉर्प्शन रेट इज 5.42 पर आवर. और मशीन डिपार्टमेंट में कितने आवर्स लग रहे हैं पर यूनिट? 1.5 आवर्स पर यूनिट लग रहे हैं. तो मैं इस 5.42 को मल्टीप्लाई करूंगा विथ 1.5 आवर्स. तो इससे मेरे पास मशीनिंग का ओवरहेड आएगा फॉर प्रोडक्ट ए, which I think is 8.13. फिर मैं I'll find out the overhead of assembly department for product A. So assembly department का absorption rate is it's 2.75 per hour. ठीक है. And product A को assembly department में hours कितने लगते हैं? 0.5. तो मेरा जो overhead लगेगा वो लगेगा 2.75 into 0.5 hours, which is 1.375. ठीक है. इससे हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी प्रोडक्ट ए की, which is, could someone add this up? Anyone? This is 15.255. ठीक है. Now let's try and do overheads for product B. So product B में मशीनिंग डिपार्टमेंट में लगते हैं 0.3 आवर्स, असेंबली में लगते हैं 2 घंटे. मशीनिंग का एब्जॉर्प्शन रेट था 5.42 पर आवर. तो मैं 5.42 को मल्टीप्लाई करूंगा विद 0.3. So I'll multiply this with 0.3. And assembly के absorption rate को मैं multiply करूंगा with 2. So this is 1.626. And for assembly हम
2.75 के एब्जॉर्प्शन रेट को मल्टीप्लाई करेंगे विथ 2 आवर्स. This is 5.5. So this will give us 15.376. Guys, any confusion on this? Especially the overhead part? कोई confusion है? Okay. अच्छा guys, this is our last question for today. अच्छा इसमें एक थ्योरी है, सही है, थ्योरी देख लो. ये है explain what is meant by a cost center. Cost center क्या होता है? यार cost center ना basically ये सारे departments होते हैं जिसको हम cost allocate कर सकते हैं या portion कर सकते हैं, मतलब जिसमें हम cost को divide कर सकते हैं. For example हमारा machining department है या हमारा assembly का जो department है, चूंकि इन departments पे हम cost transfer कर सकते हैं, portion कर सकते हैं. So these are known as cost centers. So basically इसकी definition होती है, a cost center is any department within a business to which costs can be allocated and apportioned. ठीक है, for example machining department, assembly department, all of these departments are cost centers. Okay, moving on. Janti calculates an overhead absorption rate for each cost center based on budgeted data. She then uses this to charge overheads to products. So this is a misprint. This is supposed to be cost center 1. Cost center 1 could be basically machining, and this is cost center 2. Cost center 2 could be assembly. सही, जैसे पिछले क्वेश्चंस में था, इसमें बस मशीनिंग और असेंबली की जगह नाम दिया हुआ है cost center 1 और cost center 2. And you just assume that cost center 1 is, let's say, machining department and cost center 2 is its assembly department. And the overhead absorption rate that we have for these two departments is, for cost center 1, it's 10 per labor hour. And for cost center 2, it's $4 per machine hour. Okay. This is how we would be charging our overheads. Moving on, let's see what we have to do. So Simon, a new customer, asks Janti to quote for an order of 500 units of product I. The following information is available in respect of their manufacturer. Material cost जो आएगी, let's start off. Material cost जो आएगी, material लगेगा 50 किलो at $2 per kilo. So I think material cost होगी $100 की. Then we'll have labor cost. Labor cost cost center 1 और cost center 2 की जो लगेगी. Cost center 1 में labor के लग रहे हैं 5 घंटे at the rate of 12 per hour. So this will be $60. Cost center 2 में लग रहे हैं 2 घंटे at the rate of $15 per hour. So this will be a labor cost of $30. Oops. Okay. यहाँ तक कोई मसला material labor में? Guys, any problems up till now? अच्छा, into 500 मैंने इसलिए नहीं किया इधर, because ये जो मुझे information given है ना, ये 500 यूनिट की ही given है, ये पर यूनिट नहीं given. ये जो सारा डेटा है, this is for 500 units, not for 1 unit. वरना पर यूनिट लिखा होता है, वरना बोलता all these costs are per unit, तो फिर मैं उसको मल्टीप्लाई करता 500 से, लेकिन ये ऑलरेडी 500 की दी हुई है. ठीक है. So if I add this up, this will be 190, which we call our prime cost. And then I'll add overheads for cost center 1
and cost center 2. So cost center 1 का absorption rate था, this was $10 per labor hour. तो cost center 1 का absorption rate is $10 per labor hour. तो मैं cost center 1 के labor hours देखूंगा because absorption rate is as per labor hours. So cost center 1 में इसमें labor hours कितने लग रहे हैं? 5. तो overhead भी 5 घंटे का लगेगा, which will be 50. Then when I want to charge the overheads for cost center 2, so cost center 2 का absorption rate is $4 per machine hour. So I'll write $4 and I would be needing machine hours अच्छा सॉरी गाइस, थोड़ी वीडियो लैग हो गई थी. Yeah, so the absorption rate for cost center 2 was $4 per machine hour. So cost center 2 के देख लो यार, ये मुझे cost center 2 के लेबर आवर गिवन है 2 घंटे और ये मुझे मशीन आवर गिवन है cost center 2 के which is 6 hours. तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए, सॉरी ओवरहेड्स निकालने के लिए, एब्जॉर्प्शन रेट तो 4 है, ओवरहेड निकालने के लिए मुझे इस $4 को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, विथ 2 आवर्स और 6 आवर्स. Yes guys, I need more responses. I should be multiplying this with my machine hours जो कि 6 घंटे हैं, तो ये आ जाएगा 24. ठीक है, इससे आ जाएगी हमारी टोटल कॉस्ट which is $264. ठीक है, इसके बाद हमें सेलिंग प्राइस निकालनी थी. So we will be doing this selling price thing maybe in the next class. So I have two things to ask you. एक तो आई एम होपिंग कि आप तुम लोग को ना जॉब कॉस्टिंग और यूनिट कॉस्टिंग करना आ गई है. मैंने तुम लोग को इसके 5 पास पेपर भाषण कराए हैं आज, और कल भी मैंने तुम लोग को 4-5 एग्जाम्पल्स दी थी. ठीक है, सो और हम सेलिंग प्राइस निकालना सीख लेंगे probably in the next class. The second good news for you guys is कि कल, that is your first physical day, first physical class in college, तुम लोग से मैं कल दे रहा हूँ टेस्ट. सही है, because I want to see कि where you guys stand so far, जितना मैंने तुम लोग को पढ़ाया. I wanted it to be a surprise test, but मैंने सोचा बहुत सरप्राइज हो जाओगे तो एक दिन पहले बता देता हूँ. कल तुम लोग का होगा टेस्ट और ऑफ शीट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स and this unit and batch job costing. ठीक है, so prepare for it and best of luck. Do you guys have any questions? Yes, any questions that I could help you with? हाँ, यही गुड न्यूज़ थी कि तुम लोग का टेस्ट है कल. अच्छा, if somebody wants to take a screenshot of this question, you may. Okay, and if you want to take a screenshot of this question, you can. And also this.
Okay, guys, this is me signing off. I'll see you guys tomorrow in college. So prepare for the test and have a good day.